Goa, the tiny state of India, has many things to offer. Exploring Goa in 3 days is not at all possible. It needs at least few weeks. It has vast landscape, beautiful beaches, and lot of forts. We stayed here 4 days in South Goa. Now time to move to North Goa to see couple of beaches there. I hope you guys are enjoying all the episodes so far. If you want to see all the episode, then click the I link in right top corner or check the description below. Welcome back friends, day 4th at Goa, and today we are checking out from this hotel. We are staying here since last 2 days. Actually in Palolem we stayed for 3 days, 1 day in the beach cottage and 2 days in this Oyo property. It's a decent one. The benefit is it is nearby, just 2 minutes walk from Palolem beach. And now we are going to North Goa. We booked a hotel near Anjuna beach. So we'll go there directly, we'll meet there, okay? चलो जी पहुंच गए। 90 किलोमीटर 2.5 घंटा लग गया, लेकिन रास्ता भी अच्छा था, सीनिक था। हाईवे है, बीच में 15-20 किलोमीटर घाट रोड था। इट वॉज रियली एंजॉयबल ड्राइव। चलो देखते हैं प्रॉपर्टी कैसा है। प्रॉपर्टी तो काफ़ी खूबसूरत है, पूरा गार्डन जैसा थीम है, कॉटेजेस है, ग्लास में और वुड में बना हुआ। हाँ, प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है, 2400 है ये, मतलब वन डे का फॉर 2 पर्सन। एंड हमने तो मतलब 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रूम में रह गए इधर गोवा में। पहले बाम्बू कॉटेज में रुका 1 दिन, उसके बाद नॉर्मल एक ओयो रूम लिया था जो कि 2 दिन का 2700 था, और ये 1 डे का 2400। लेकिन अच्छा है, प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छा है, मज़ा आएगा। और इधर से बीच सिर्फ 80 मीटर्स है, विच विल नॉट टेक मोर देन 2 to 3 minutes। एनीवे वी विल फ्रेशन अप, देन विल गो टू बीच, ओके। आयुष्मान, we need to go to beach, Ayushman. Okay. Yeah, you are sleeping only everywhere, Ayushman. Yeah, this bed is very comfy. Very comfortable, huh? Yeah. So you don't go anywhere now, you just sleep here, okay? We will go to beach. No, never. Huh? Never. Okay, then let's go. We are getting late. This property is close to Anjuna beach, south side of Anjuna beach, not the actual Anjuna beach, but this side of it, right, it will be less crowded. And yeah, for 2 minutes
walk, not 2 minutes, I think 3-4 minutes to up to 5 minutes it will take. Yeah, so we'll find out a place where we can have lunch. Okay, its time is almost 1 o'clock now. Let's see. हाँ, मैं प्रॉपर्टी का नाम बोलना भूल गया. Curlies Zulu land. It is available in booking.com. You can go to booking.com and find it out. I will also give the link in the description box. Okay. See, we reached. Okay, nice. It is in the mountain top. It looks like, huh? It is in the mountain. Wow. You look. Your destination is on the left. Okay, you need to go down to reach to the beach. क्या मस्त जगह है नहीं? See, full of rocks. Waves are smashing at rocks. Looks very beautiful. Wow. वो सेंट मैरी आइलैंड में जैसा ये था ना, पत्थर था, एग्जैक्टली सेम वही वोल्केनो लावा टाइप का ही लग रहा है स्ट्रक्चर, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है. ये मतलब आफ्टरनून का टाइम है, काफ़ी धूप है, नहीं तो थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे इधर. और इवनिंग को तो हमारा दूसरा प्लान है, नहीं आ सकते. एनीवे, ओके, नाउ लेट्स गो, लेट्स हैव समथिंग मैन, फीलिंग हंग्री एज वेल. Food was good, especially with this view, right? In beach shacks, this is the benefit. You are right in front of the ocean and enjoying your meal. Definitely, it is a nice experience. Now it's, what's the time? 2 o'clock. We'll take some rest for an hour. Then we will proceed to Aguada Fort. Aguada Fort is 16 kilometers from here. And Google says it will take 45 minutes. Okay, let's meet directly at Aguada Fort. ड्रॉप मार रही है यूट्यूब पे, नॉन एडवर्ट डाल रही है. बाप रे, भयंकर गर्मी है भाई बाहर. ओफो, आयुष्मान सो जा अभी. नहीं, हैं? अभी नहीं. 1 घंटा सो जा, उसके बाद जाएंगे फोर्ट, अगवाड़ा फोर्ट. के के